Hi everyone, you're welcome to my Professor Note. This is Bhupesh Sharma, and here in this video, we are doing the detailed analysis of literary criticism questions which were asked in December 2025 exam that was conducted on 7th of January in 2026. So here we're going to analyze these questions in a very detailed manner, and I hope you guys are doing well और आप अपनी सेहत का खास ख्याल रख रहे हैं. Don't compromise on that. So here's the very first question. Which of the following issues is not focused by Horace in his Ars Poetica? And Horace was also covered by me right before the exam in my series of literary criticism. So let's find out which issue is not focused by Horace. The detachment of writer to his work, tradition, and custom. He said the writer has to be immersed into the tradition, into his work, and the custom. He must know everything. So that is not possible, right? So this does not focus, right? So here we have the answer. The moral and social function of poetry, yes, it has that purpose to fulfill. It instructs and delights. That's what he said, right? It instructs and delight. The contribution of an audience to the composition of poetry. An awareness of literary history and historical change in language and genre. Poet must be aware of these things, right? So here we have our answer to it. Horace का जो वर्क है अभी इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं because it is going to help you further, for your further preparation. So it was a epistle that we know, right? It was a epistle where he offered the practical advice uh, to the children's, or I would say to the young men in a Piso family, राइट? ये पोएट्री लिखी कैसे जाती है, एक पोएट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड हाउ इट शैल बी पब्लिश्ड, ठीक है? और पोएट्री में क्या-क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, ये सभी चीज़ें इस पोएट्री में बताई गई थी. आर्स पोएटिका इटसेल्फ सेज दैट द आर्ट ऑफ पोएट्री, ठीक है? कि पोएट्री क्या है, क्यों है, कैसे लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, क्या पर्पस है? एक तो पर्पस है कि इट इंस्ट्रक्ट्स एंड डिलाइट्स. ये वर्ड यूज़ किए थे, डोसेरे एंड डेलेक्टेरे. ये वर्ड्स यूज किए गए थे. दे माइट बी आस्क्ड. तो एग्जाम में कई बार इस तरह से होता है कि आपको उसका ओरिजिन ऑफ द वर्ड पूछा जाता है. ये कॉमेडी वर्ड कहाँ से आया है, और थिंग के पोएट वर्ड्स कहाँ से आया है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने इन सभी को यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है? तो उस ऑर्डर में हम इन्हें सेटअप कर देंगे. पर अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो जानना रहता है, ये जो वर्क्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए वन बाय वन. वर्ड्स ऑफ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, ठीक है, 1917, ये आपके सामने डेट्स हैं. आई आई हैव टू रीड देम फॉर यू. सो मैं आपको इसमें चीज़ मेन ये बताना चाहता हूँ कि चाहे ये वर्क वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन हो, चाहे स्केप्टिसिज्म ऑफ पोइट्री हो, थेटिक फैलेसी हो, स्टडी ऑफ पोइट्री, स्केप्टिसिज्म ऑफ एंड पोइट्री एंड वर्ड्सवर्थ थ्योरी, ये तीनों जो वर्क्स हैं, दे आर प्राइमरली फोकस ऑन द रोमांटिक पोइट्री. ये उसका क्रिटिकल एनालिसिस है. स्पेसिफिकली दे आर फोकसिंग ऑन द वर्ड्सवर्थ. जैसे कि ये वर्क बात करता है, it emphasizes on the Wordsworth, you know, Wordsworth theory of poetry, that poetry is the emotions recollected in tranquility. ये मेरा पेन थोड़ा सा ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है. Sorry, because of that I'm not able to write things in a legible manner. But yeah, I'll read it for you. Emotions recollected in tranquility. That was his philosophy, right? And he emphasizes on that in this. Pathetic fallacy, आपको पता है, it's a term coined by the John Ruskin. John Ruskin की ये term थी. ठीक है, I'll get back to the question where it is present in the larger size.
सो ठीक है, पैथेटिक फैलेसी आपको पता है कि दैट इट वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय द जॉन रस्किन where he said that the poets attach or assign the false um, image to the object. They are driven by the emotions that the trees are dancing, the clouds are crying. So this is false image that you're attaching, which is not good. So that was his analysis of the personification that we do in literature. Use of poetry and the use of criticism. Use of criticism के बारे में टी एस इलियट कहते हैं that its job is to distinguish between good poetry and the bad poetry. ये काम है criticism का. Use of poetry है, the use of poetry is to uh, write about the things, not to not to put forth your opinions, or to prove your points, or to create an agenda, right? Rather, you should follow the tradition, you should become the part of the tradition. ठीक है, जो ऐसी चीजें हैं which are the very deep part of the human, जिसके बारे में हमेशा से बात की जा रही है, उसके बारे में तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? एग्जाम्पल यहाँ पे शैली के बारे में कहते हैं, ये रोमांटिक्स को जो है ये क्रिटिक करते हैं, ठीक है, कि जो जो पोइट्री है दैट हैज टू बी इम्पर्सनल. यू शुड नॉट इन्वॉल्व योर पर्सनल फीलिंग्स इनटू इट. शैले ने या वर्ड्सवर्थ ने या कॉलरिज ने, they were the people of a very liberal thoughts, so they use poetry as a mean to support their revolutions, you know that he's talking to Skylark that take my message, and make the society alert and aware, right? All those things. So he was against it. जो टी एस एलियर थे, इनका व्यू इससे हटके था. डिक्शन में यही बात की जाती है कि the words were talk about the use the language of the peasants and the rustic language he used, but his syntax, the vocabulary that he used was very advanced and the complex, right? There are some of the examples given by them. तो ये सम क्रिटिसिज्म है इन वर्क्स का, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो ये चीजें पूछ ली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसकी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं, ये यहाँ पे है. ठीक है, यूज ऑफ लिटरेसी, यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 है. ठीक है, 1937 skepticism and poetry है. 1942 आपका fallacy in the static fallacy in the 19th century है, and the study of Wordsworth 1944 है. Now let's come to the another question here. The Who wrote the following about Rousseau. Like his favorite philosopher Plato, Rousseau sought to discover and produce the moral man who would make the moral society, and the moral society that would foster the moral man. Okay. So there is a reciprocation that the good society make moral man may create the good society. So J. Hales Miller has not write about it, neither Mary Wollstonecraft nor Dr. Johnson. It's a Peter Gay. He write about this in his work called The Enlightenment. He write about this in his work called The Enlightenment and Interpretation, 1966. Right. This is where he write about it. He compares Rousseau's project to Plato's. Now, coming back to these other options, so J. Hills Miller has written the theory of poetry or theory on poetry, something of that sort. Theory of poetry, there is a work by him. Then we have Mary Wollstonecraft. He criticized Rousseau's view on the women's education. Dr. Johnson also criticized him for his natural men's concept. अब इनके क्रिटिकल वर्क क्या है वो आपको आगे के लिए ध्यान में रखना है. डॉक्टर जॉनसन हैज राइट अबाउट द लाइव्स ऑफ पोएट्स. ठीक है, जो कि हम अपने ब्रिटिश लिटरेचर में वी स्टडी इट, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी ये नोट्स में मेंशन्ड है चीजें. और अनदर इज द प्रीफेस ऑन शेक्सपियर, है ना. तो इनके क्रिटिसिज्म के तो वर्क ये हैं, राइट.
और ये स्टडी मटेरियल में भी चीजें कवर है। नाउ, which of the following critical works of Matthew Arnold does preach that the kingdom of God is within you? Where he analyzed the Christianity, where he analyzed the Bible as an as a poetry. He did that in his work called Literature and Dogma, and that's where he write that. In essays in criticism, one of the most famous essay from it is the function of the criticism. अगर आपको याद होगा, the functions of the criticism, right? This is the work by him, and this is what he published here. Culture and Anarchy. Here in this work, he produced most of his terms where he classified the society in the Hebraism and the Hellenism, right? So Hellenism is a society that is culturally flexible, and the Hebraism is society that is morally very strict. They are very rigid. So he said that it has to be the combination of both. इसमें flexibility भी होनी चाहिए और morals भी होनी चाहिए. He also talk about the Philistines. Philistines. Philistine is a middle class, materialistic people, and he talk about the barbarian. He talk about the elite and the aristocratics. So these are the terms he has given here. He also talk about the sweetness and light here. Sweetness is the poetry and the light is the intelligence. So it has to be the combination of both. Only then we can flourish as a good society. In a study of poetry, he said that the poetry is a criticism of life. Criticism of life. So these are some of the things he said, and in the literature and dogma, he said this: the kingdom of God is within you. ठीक है, ये सारी चीजें आपको स्टडी मटेरियल में अवेलेबल हो जाती हैं. आपका काम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना होता है, और वी गाइड यू. आई गाइड यू देयर पर्सनली विद एवरीथिंग. In Literature and Dogma, 1873, Arnold reinterprets the Bible as poetry rather than the literal dogma. Dogma क्या होता है? Dogmas होते हैं blind faiths. कि तुम ऐसा बाइबल को एज अ ब्लाइंड फेथ मत बोलो कि किसी ने कुछ कह दिया अब इसे फॉलो करना पड़ेगा. नो, रीड इट एज अ पोइट्री. पोइट्री इज समथिंग वेयर द कल्चर प्रिजर्व्स. ये कल्चर है बाइबल में. ठीक है, एक समाज की परिकल्पना करता है ये. इनविजन्स सोसाइटी, यू नो, आर वी लिविंग दैट वे. तो उस चीज को एसिमिलेट करना, समझना धर्म को. आज मैंने कई अपने दोस्त देखे, ठीक है, राधा कृष्ण के छोटे छोटे राधा कृष्ण उनके साथ खेलते रहेंगे, है ना. वो गले में वो एक अपने माला पहनेंगे, ठीक है, और उनके काम वही है, दुर्गति वाले, है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. uh, Assertion A: Sydney's apology for poetry is in many ways a seminal. Sydney's apology for poetry, in many ways, a seminal text of literary criticism. It was one of the first work. It was a groundbreaking work in the field of the literary criticism that has defended the poetry against the claims of Stephen Gosson, and also some of the attacks which were being made by the ancient scholars. And the reason for this, it represents the first synthesis in the English language of the various trends and concerns of Renaissance literary criticism, drawing on Aristotle, uh, Horace, and the more recent writers such as the Boccaccio and Julius Caesar Scaliger. Yes, he did. This is the right reason. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. So now we will just get back to this apology for poetry. What was it? So see, Sidney's apology for poetry. Here he defended and he countered the Stephen Gosson's, you know, Stephen Gosson
in his work, he attacked the apology. Uh, he attacked the poetry. He called it is a mother of lies. But he said it is a mother of lies. And how Stephen how Sidney defended it? He said that poets never claim anything. We never claimed anything. We just envision a society with our folk conceits. We envision a society that this is how it shall be. Flawless nature. We imitate. He refer here to the Aristotle. We imitate, but we do not do the slavish copying. We do not do the exact copy pasting there. We add new things to it. We create a society that it should be like, राइट? हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ पे लोग अच्छे से जी सकें. We do not imitate exactly what is happening out there, right? Then he said that it is a waste of time. Poetry क्या है? ये waste of time है. No, we are the one who teach in a very effective manner. Then those uh, those subjects who has a very abstract concepts like a philosophy, and this is how he defended it. He said that the poetry is a mother of abuses. He said, no, no, we do not abuse. There is a difference between a good poet and the versifier merely. Even the comedy, you know, satirizes and make fun of the vices indirectly. कॉमेडी में हम क्या करते हैं? हम बेवकूफियों के ऊपर ही तो हंसते हैं. Even the comedy make fun of that. And this is how here he is defending drama. And then he said, and then the Stephen Gosons have said that even the Plato have banished the poets. He said that he was not against the poet. He was against the abuses. He was against the abuses, right? And this is how Sydney uh, defended the poetry, है ना? अभी मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं. मैं स्टीफन गोसोन का मैं वर्क वो भूल गया. अ, याद नहीं आ रहा यार. कोई नहीं, आपको याद होगा. हाँ, इतना कॉमन सा तो वर्क है. कई बार ना बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं माइंड में, इतना कुछ याद रखना पड़ता है. बेसिक सी चीज भूल जाते हैं. ओके, सो दिस इज द थिंग. ठीक है, हम लोग इस तरीके से पढ़ना है और मैं इसी तरीके से आपको क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ. इसी तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. मतलब एक परफेक्ट प्रेपरेशन आपकी होती है. ठीक है, कहाँ पे? माय प्रोफेसर नोट के प्लेटफॉर्म पे. सो नाउ हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली मैच्ड विद द टेक्स्ट? इसमें कुछ हमारे पास टेक्स्ट है, जैसे कि एन apology of poetry, again what we discussed right now, the metaphysical poets, preface to lyrical ballads, and the study of poetry, essay on man. ये हमने सारे कवर करने हैं, हमने सारे कवर किए हुए. ठीक है. The poet is the food for the tenderest stomachs. मतलब किसी भी आम कॉमन से कॉमन आदमी को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. पोएट हर चीज को इजी कर देता है. दे टीच यू विद अ डिलाइट. ठीक है, तो ये कहा है इन्होंने इसमें, ये सही है, correctly matched. This essay proposes to halt at the frontier of metaphysics or mysticism and confine itself to such a practical conclusions as can be applied by the responsible person interested in poetry. Can be applied by the responsible person, the metaphysical poets. So this metaphysical poet is a essay by T.S. Eliot, but it does not align with the ideas which were being discussed here. This is not correct here. The invaluable work of our elder writers, I had almost said, the work of Shakespeare, Milton, are driven into neglect by frantic novels, sickly and stupid German tragedies, and uh, dillages of idle and extravagant stories in verse, preface to lyrical ballads. So, yeah, Wordsworth said this, कि शेक्सपियर को हमारे क्लासिक्स को नेग्लेक्ट किया गया, है ना? And these German stupid German tragedies were given the attention. For poetry, the idea is everything. The rest in the world is a world of illusion, of divine illusion. Poetry attaches its emotion to the idea. The idea is the fact. The study of
the poetry, the study of poetry by Matthew Arnold. Poetry, the idea is everything. Here he said that the poetry is a criticism of life. So D or C हमारा correct है. A fool might once himself alone expose. Now one in a verse makes many more in prose. Essay on men है. So this is not the correct to be here, right? So yeah, these are the correct ones. A, B, and D, right? So okay, guys, this is what we have learned over here, right? These are the answers. And जून 2026 के लिए हमारा बैच शुरू है. रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल हैं, बुकलेट हैं, मॉक टेस्ट हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, व्हाट नॉट. ये मटेरियल अवेलेबल है. दोनों बुकलेट्स आपको अवेल करनी है. इट कॉस्ट यू 5500. 50. हाँ, ओके ओके, या इट वाज 5550. दिस इज द प्राइस ऑफ इट. एंड ये आपका बैच है. अगर आपको साथ में ये चीज़ें लेनी है 6 मंथ की वैलिडिटी पे, ये 3950 का आपको पड़ता है, और ये इतने का कॉस्ट बनती है 95 डिस्काउंट लगा करके. वी आर गिविंग यू अ गुड डिस्काउंट इवन हियर, बिकॉज इसकी वैल्यू तो पे तो हम अभी वी कांट रिड्यूस द अमाउंट, बट स्टिल थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे करके इसको इतना किया गया है. थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा है यार, है ना? मतलब इसका प्राइस तो इतना ही बैठता है, पे कम कर देना. आई डोंट नो हाउ गुड दिस थिंग इज, बट या, और आपको कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने पड़ते हैं इस पे. तो या, दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे फॉर दिस क्लासेस एंड नोट्स टुगेदर. क्लासेस लेनी है इतना हो जाएगा, और नोट्स लेने हैं तो ये है. चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश लिटरेचर कॉम्पिटेटिव्स का, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे फोकस करें यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश पे. तो या, दिस इज द नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट अस हियर. स्टडी मटेरियल, क्लासेस, मॉक टेस्ट, मेंटरशिप, और ऐसे ही हम बाकी के यूनिट्स के भी क्वेश्चन को यहाँ पे एनालाइज करेंगे वेरी सून अपकमिंग वीडियोस. ऑल द बेस्ट गाइस. बाकी आपका रिजल्ट जिसका आना है उसका तो भी आ ही जाएगा. बाकी जो आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस वीडियो गोइंग टू हेल्प यू immensely. All the very best. And do let me know about your doubts and confusion in the comment section below. शर्माना नहीं चाहिए, है ना? अपने जो डाउट्स हैं वो लिख देना चाहिए. ओके, बाय, विल सी यू सून नेक्स्ट वीडियो.